ओके नमस्कार ओडिशा ओडिया शिखा को स्वागत। ओडिशा B.Ed एंट्रांस 2026 आर्ट्स स्ट्रीम जियोग्राफी प्रैक्टिस प्रीवियसली आम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते। नमस्कार नमस्कार समस्त को शुभ संध्या। किंतु आज क्लास टोटल न्यू टॉपिक डिस्कस करिबा जेमती जियोग्राफी रो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक अच्छे ऑडियो समस्त को क्लियर आसुची आशा करूची। Today's class is crucial for geography section. We are going to solve 55 OMR question 6. Latitude and longitude as a topic. These concepts are the backbone of geography. हम समस्त जानी छे। सब वर्ष एथुर निहांती 2 ରୁ 3 क्वेश्चन आसे कंफ्यूजिंग करे कि भी क्वेश्चन दिए। ठीक अच्छे फर्स्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करबा पूर्वरु हम जानी छे अक्षांश बा द्राघिमा विषय रे उडे जनरल छोट नॉलेज समस्तंकर अछि हना नहीं। सही परे हम किछि नॉर्मल टॉपिक डिस्कशन करिबा। जंती व्हाट इज ए ग्लोब। ग्लोब कहिले कोन बुझछो? आंसर समझते दे दियो। ओके एक नंबर है ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। ओके ना कौन? ओके गोटे सेकंड। ए ग्लोब इज मिनिएचर 3-dimensional representation of true model of a planet। ना ग्लोब गोटे कौन गोटे सिंबलिकली सेटा गोटे अर्थ नुह गोटे अर्थ रोटे सिंबल। ठीक अच्छे द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि आर्कटिक सर्कल लोकेटेड? ओके नमस्कार नमस्कार प्रणाम प्रणाम समस्त को। कोटे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ना कौन केमती नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है आम से देखो गोटे ब्रीफली गोटे छोट गोटे सेकंड टिके माउस रे टिके पॉइंटर करी प्रॉब्लम होची। ठीक अच्छे एटा है इक्वेटर। ठीक अच्छे एटी है 0 डिग्री 0 डिग्री। सेमती आर टॉरिड जोन कोटा? टॉरिड जोन कहले एटा है दीटा है टॉरिड जोन। ठीक अच्छे ये दीटा को टॉरिड जोन कह जाए ना नहीं। टॉरिड जोन जोटी इक्वेटर को लगी सेटा टॉरिड जोन कह जाए। देन है ऊपर है नॉर्थ पोल ये जो पॉइंट को नॉर्थ पोल। देन तल है साउथ पोल साउथ पोल। ठीक अच्छे देन सेमती सबुठू टॉप रे थाए फ्रिजिड जोन। एटा को फ्रिजिड जोन कह जाए एफ एफ आज ए सिंबल कल एक्सेप्ट करबा। सेमती एपटर भी जे फ्रिजिड जोन टिके माउस पॉइंटर करूची तो टिके ड्राइंग खराब आसी पारे तो केही भी माइंड करिवेन। ठीक अच्छे देन आसीबो आर्कटिक सर्कल बा कर्कट क्रांति जोटा आम कहूचे ना कौन आर्कटिक सर्कल। देन अंटार्कटिका सर्कल जोटा को मकर क्रांति कहूचे ना कौन। अरे मकर क्रांति गोटे आ भितर नहीं आ भितर जो एरिया टाको जो आ गोटे डिवाइड अच्छी एटा को मकर क्रांति कहूचे। मकर क्रांति एटा कहूचे ना कौन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
एटा को एटा अंटार्कटिका एटा मकर क्रांति बा कैप्रिकॉन ओके एटा हला आ गोटे सेमती एवढे गोटे थिबो जोटा कर्कट क्रांति कहंती कैंसर ठीक अछि आर्कटिक सर्कल कोड रहला एटा में कहितले आर्कटिक सर्कल जोटा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ठीक अछि एटा हला अंटार्कटिका जोटा साउदर्न हेमिस्फीयर ठीक अछि जस्ट गोटे मिनिएचर बनैतिली ठीक अछि तो आर्कटिक सर्कल इज अ मेजर सर्कल ऑफ लैटिट्यूड लोकेटेड एट अप्रोक्सीमेटली 6.66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर अच्छा डिग्री गुडा कहि दोछि डिग्री केते सबरो टॉप जोटा 66.1/2 नॉर्थ एटा 66 देन तापटा 23 ने कोन एटा हला 66 देन आसिला 23 ना कोन एटा 0 डिग्री ए जोटा 0 डिग्री वेरी गुड ओके सेमती तळ भी सेमती हो ओके ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑफ 66 हाफ डिग्री नॉर्थ इज नोन एज व्हाट इट्स पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑफ 66 हाफ अन्य समझते आंसर दे दियो वेरी गुड कौन आर्कटिक सर्कल जस्ट इना टिके पूर्व जोटा कहते आर्कटिक सर्कल एटा नहीं ना कौन दिस स्पेसिफिक नॉर्दर्न लैटिट्यूड इज जियोग्राफिकली डिफाइंड एज द आर्कटिक सर्कल ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर शोन ऑन द ग्लोब इन द ट्रू साइज अच्छा गोटे काम करबा कि पले जियोग्राफी रो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड गोटे स्पेसिफिक थ्योरी क्लासेस आनिबा कि जोथि ए टू जेड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड विषय पूरा डिटेल बुझिबा ना कोन कहउछंती आनिबा गोटे क्लास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर शोन ऑन द ग्लोब इन द ट्रू साइज फोर रैम नहीं अरे सबु किछि ग्लोब रे सबु जिंस निज ट्रू साइज रे थाए देखा जाए ना कौन ऑल ऑफ दिस अच्छा सिंबलिकली नॉट इन फिजिकली ओके बिकॉज ग्लोब इज ए 3D मॉडल इट कैन represent the relative size of land masses and water but it's more accurately than a 2D map to 3D map as a perfect ठीक अछि describe the shape of the earth aku describe karo a sphere which bulges at the poles and flattens at the center a sphere which flattens at the poles and bulges at the center a sphere which bulges at the poles and at the center a perfect sphere good evening अच्छा बजेस कहले कौन बुझ देख धन्य ये हला केते 180 ये 180 ठीक अछि देन ये 180 माने जस्ट टिके बंका हो जाउची प्ले की प्लेस माइंड करिवन ठीक अछि ओके एई जो पोस्टा एई जो सर्टेन एरिया टा एटा टिके एंती बाहर को रहतो बाहर को माने एंती तो होला एंती रहतो एटा बल्जेस टिके चेप्टा हेगी तो ठीक अछि BLSPO which flatters at the poles and bulges at the center रे bulges the earth is an oblate spheroid rotation causes it to bulge at the equator and flatten at the poles अच्छा flatten at the pole माने कौन धन्य जो पोल नॉर्थ पोल आउ साउथ पोल ये जगह टिके कौन टिके समतल भलिया थबो एंती थिबो टिके समतल भलिया थिबो टिके फ्लैटन थिबो
माने एई जो एरियाटा टिके समतल थिबो मोमेंट ऑफ हेवनली बॉडी ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड व्हाट माने निज अक्षांश रे जो निज स्थान रे जो घुरीबा निज एक्सिस रे घुरीबाटा कोन कहज कोन कहज रोटेशन वेरी गुड परफेक्ट नेक्स्ट जीव rotation is the spinning of a body around its internal axis okay next question what is called a needle fixed through the globe in a tidal manner जो ग्लोब रे जो नीडल टा फसी रही तो कौन कह जाए कि कहि परिबो एक्सिस वेरी गुड परफेक्ट very good the axis is the imaginary line on which the earth rotates titled at 23.5 degree okay what are latitude and longitude lines thick and thin line that divide the earth an imaginary line that divide the earth a real line that divides the earth long and short line that divide the earth question number 8 नाम আছে सिंपल से कहि वाटर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कोडा कहे सीधा ना बंका को जब पैरेलल माने हॉरिजॉन्टल ना पोर्ट्रेट जोटा कह कोडा लैटिट्यूड कोडा लॉन्गिट्यूड कोडा पिले एटा कोन और एटा कोन जोटा इक्वेटर लाइन जोटा सेटा कोन कहंती लैटिट्यूड ना कोन एटा हला एल लैट्यूड इटाला लॉन्ग LONG ठीक अच्छे स्लैंटिंग लाइन लैटिट्यूड ओके वेरी गुड प्रणाम 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 समस्त को प्रणाम सुसंगीत ओके एटा बुझी पाइल से कौन कही व्हाट आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स latitude और longitude line कोटा an imaginary line that divide the earth ना कौन गोटा अनुमानिक रेखा जोटा कौन पृथ्वी को चारि भाग रे व्यक्त कराई 90 ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 जोटा को 936 ना कौन ठीक अच्छे 360 डिग्री जोटा ओके these are imaginary coordinates used to locate points on earth's surface okay the number of parallels of latitude are how much केते की कहि परिबो कार उत्तर फास्ट आउस वेरी गुड बहुत बढ़िया अन्य माने समझते just accept as it globe latitude ना कौन केते वेरी 180 ना कौन एमती डिवाइड कर दबो 180 ना कौन there are 90 degrees of latitude both north and south pole of the equator north south ठीक है ओके 100 दीटा होगा ना कौन what divides the earth into two equal parts the northern hemisphere and the southern hemisphere मन रखी तो एठी टिके भी कंफ्यूजन मन
सिंपल क्वेश्चन नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर को कोटा डिवाइड करूची हे इटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन एक्सेप्ट ऑल दीज आर नॉर्दर्न एक्सेप्ट ऑल दीज आर साउदर्न कोटा डिवाइड करूची इक्वेटर ना कोन एटा डिवाइड करूची ओके perfect okay the equator is the 0 degree latitude line that bisects the earth horizontally कहले एमती एमती vertically कहले एमती ठीक अछि the prime meridian passes through what greenwood greenfield greenwich और greenwich which या which देखियो बोल सर हैला which आ which ये दुटा भीतर डिफरेंस देखियो नहीं 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 भूल करनी ग्रीन व्हिच या व्हिच ओके टिके पढ़े जाइतिली हां कोडा कोन ऑप्शन देला समझते डी ग्रीन व्हिच वेरी गुड तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल लाइन पासेस थ्रू द ग्रीनविच लंडन से जगहटा ना कोन की कहि परिबो जो लंडन जो प्लेसेस रे ग्रीनविच लाइन जाउची से जगहटा ना कोन की कहि परिबो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ना कोन ब्रिटिश BRO मन रखते ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी यूके रे लोकेटेड यूनाइटेड किंगडम लंडन जोटा कहूचे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ठीक है द नंबर ऑफ मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड एटा को छाड़ा ए लॉन्गिट्यूड टा घटाई दियो आर डैश 180 360 नन ऑफ दिस लॉन्गिट्यूड लाइंस सर्कल जोटा काम करूछ एमती जो अर्थ को एन जोटा को एमती कंप्लीट करूची 360 ना कोन longitude lines encircle the earth in 360 degrees okay perfect name one of the following parallels of latitude as tropic of cancer d is हला डिग्री शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ठीक अछि क्वेश्चन टिके बनेला बडे डिग्री सिंबल उडा को मिलुनी ना सिस्टम रे ओके आंसर दीजिए समझते ये आंसर आसी नहीं कौन है पिले आंसर ये आसी नहीं कौन इतने कंफ्यूजन अरे से कहि देखो नेम ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर केते 23.30 डिग्री नुह जोटा को कर्कट क्रांति कहती परा मु तुमको कही पूरा फास्ट पेज रे कही सेमती सेम तल साइड रो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.30 डिग्री है ना नहीं आ सेमती 66.3 सेटा केते 66.5 सेटा हला कोन आर्कटिक ऊपर एटी ऊपर तळे हला कोन अंटार्कटिका
इधर कौन डिफरेंस अछि तुम मन भाबुछ तो भाबेर किछ दरकार ही नहीं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट 23.5 डिग्री नॉर्थ ओके what are meridian of longitude the lines running from north pole to the south poles the lines running from the north pole to east poles the line running from north pole to west pole the line running from the east pole to the south pole kuda सिकले मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कौन के भल से भाव पे किसी हार्ड जिनस ना जस्ट मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड देखो इटा हला लॉन्गिट्यूड ना कौन ये लाइन टाको लॉन्गिट्यूड कहते लाइन टाको कौन लाइन्स रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इटा इन साउथ ठीक अच्छे ये जो लाइन टाको कौन कहते ठीक अच्छे ओके मेरिडियंस आर वर्टिकल लाइन्स दैट कनेक्ट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ओके परफेक्ट व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्वेश्चन 15 पहुंचले कोटा जल्दी जल्दी आंसर दियो तो भाबिबार ही किसी नहीं कौन प्राइम मेरिडियन कहना सी कही व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ने कोटा डिवाइड करूची प्राइम मेरिडियन ना प्राइम मेरिडियन ही जणाए हमको ईस्टर्न कोटा वेस्टर्न कोटा प्राइम मेरिडियन okay between which parallels of latitude is the torrid zone situated torrid zone कोटी torrid zone center रे अछि ना कोन सेंटर रो टिके ऊपर को टिके तळ को जोटा को हमें कहू torrid zone मु जस्ट टिके पूर्व रो कहितली यार्थ रो ना टॉर्रिड जोन सेटा नुह टॉर्रिड जोन कोटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रे ठीक अछि एग्जांपल मु देखै दिबी काली गोटे क्लास नै जिबा जो थरे जियोग्राफी रो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड रो स्टेप बाय स्टेप गोटे थ्योरी क्लासेस पर ड्राइंग करी प्रॉपर्ली म हाथ देखि ठीक अछि द टॉर्रिड जोन इज द ट्रॉपिकल रीजन बिटवीन टू ट्रॉपिक्स ठीक है IST stands for internal specific time ना internal standard temperate Indian standard time Indian specific time India रो standard time केते किए कहबो Indian standard time केते IST केते India रो IST केते ओके वेरी गुड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST केते 82.30 डिग्री ईस्ट बा 1/2 एटी को আছে ठीक আছে 30 बा 1/2 को আছে very good okay the globe is true model of the what यार तो सिंपल एटा किछ कहया दरकार नै स्किप करिवा which of the following zone is situated between 66
30 degree south and poles. एटाकू फ्रिजिड जोन को आज एफ फ्रिजिड जोन जोटा ना कौन ठीक अच्छे the areas near the poles beyond the Arctic and Antarctic circles are frigid zones. Okay, जोटी कौन सूर्य किरण पड़ी पारे ना से फ्रिजिड जोन्स कह जाए जिते सूर्य धन्य सूर्य एटा इक्वेटर सूर्य किरण ठीक अच्छे जमती मुझे ड्राइंग कर प्रोब्लेम हो सेमती कौन सूर्य डायरेक्टली यही जाके आसब ठीक अच्छे सेमती यही जाके आसब तापर बिफोर एबव जीव ना आउ कहीं कहल एमती रहीगला ना ऊपर को जीवनी एमती ऊपर पटे पलैज सूर्य किरण तो ये जो जगह को फ्रिजिड जोन कहुगला ठीक अच्छे ये से फ्रिजिड जोन ये एरिया बरफ पूरा एरिया आर्कटिक और अंटार्कटिक द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर ऑफ व्हाट equal length. Capricorn is shorter than the Cancer. Capricorn is bigger than the Cancer. Very big difference between these two. कि कहि परिबो 20 नंबर प्रश्न the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn are माने दीटा समान ना दीटा डिफरेंस अछि देखो समान इक्वल लेंथ ठीक अछि these two parallels are equidistant from the equator and those have the equal lengths. Okay, earth is slightly flatter at the where कोटी मु तो मानु कहितली कमला गोटे एग्जांपल पूरा कोन इयर एई जगह रे टिके फ्लैटर टिके समतल थाए अर्थ सेमती तळर भी एई जगह रे पूरा एग्जैक्टली नॉर्थ पोल इटा साउथ पोल ठीक अछि कौन नॉर्थ एंड साउथ पोल ठीक अच्छे पोलर फ्लैटनिंग इज ए रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन जो पोलर फ्लैटनिंग टी रोए अर्थ इज स्लाइटली बल्ज इन दी कोडी जस्ट तुम कही एमती ये जगह टिके कौन चेप्टा रुहे टिके बंका रुहे बा लंबा रुहे जोटा कहते लंबा टिके रुहे बल्ज माने टिके लंबा middle मझिरे the middle refers to the equator where earth poses due to centrifugal force. Okay, needle are fixed on the globe in the tidal manner which is called what भाई दरकार नहीं आंसर जल्दी से दरकार तेईस नंबर प्रश्न अच्छे आम कौन एक्सेस ना कौन इटा जो ग्लोब टाइट जो झुलिक रही जो ग्लोबटा ठीक अच्छे ये जो झुलिया पॉइंट एटा है एक्सेस ना कौन दिस रिप्रेजेंटेशन द अर्थ्स रोटेशन axis rotational axis उटा कहते 2 points on the global passing through axis are called as dash and dash ठीक है 2 points on the globe है globe रो 2 point एटा ला गोटे पॉइंट एटा गोटे पॉइंट ठीक अछि
नॉर्थ आउ साउथ पोल ठीक अच्छे वेरी गुड the axis terminates at the geographic north and south poles imaginary line running on the globe divides it into two equal parts line is known as the what equator none of these above pole axis pela imaginary line running on the globe divide it into two equal parts इक्वेटर ना कौन यहाँ इक्वेटर जोटि की 0 डिग्री थाए ना कौन द इक्वेटर इज द प्राइमरी डिवाइडिंग लाइन फॉर द नॉर्थ टू साउदर्न हेमिस्फीयर डेज एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द ग्लोब व्हेन द सन इज एबव कोडी राति और दिन समान थाए जो सन एबव माने सन कोडी थाए को सीधा थिले अरे ये तुम मानक देखी आईटा इक्वेटर आईटा इक्वेटर ठीक अच्छे यहाँ इक्वेटर ये सीधा थे पूरा सूर्य कौन राति और दिन सामान हो do you know equinox when the sun's rays fall directly on the equator latitude of south pole is how much 0 degree 40 degree 60 degree 90 degree north south आंसर तुम केते लैटिट्यूड अरे हे लैटिट्यूड एमती डिवाइड हुए ना कि नॉर्दर्न साउदर्न 90 है नॉर्दर्न 90 साउदर्न 90 ठीक अच्छे एपट भी 90 एपट भी 90 सेमती चार्टा ओके the pole are located at 90 degree latitude the poles are अरे देखो तुम मैंने ये बुझी पाइल बोधे ये जो पॉइंट एटा जो सर्टेन पॉइंट था ये 90 डिग्री को आजे ठीक अच्छे which of the following latitude forms a great circle 23.5 66.5 degree 90 degree चलो which of the following latitude forms a great circle अरे ग्रेट सर्कल कहले कोटा प्राइमरी मेरिडियन 0 डिग्री आ कौन भावुच ए भाविया जिनस अच्छी कौन ना कौन 0 degree latitude equator is the only latitude that is a great circle ठीक है equator भी कौन ना कौन the latitude of a place expresses its angular by angle shoot of angle or angular position relatives to the plane of what equator axis of the earth arctic circle tropic of capricorn so the latitude of a place expresses its angular position relative to the plane of what कोटा
कौन ए जाए भी समस्त डाउट ना कौन ए जाए भी डाउट नहीं अच्छा ठीक अच्छे बुझी दउछ सो द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस लैटिट्यूड कोटा लॉन्गिट्यूड कोटा लंबाटा लॉन्गिट्यूड लॉन्ग ठीक अच्छे LON जहाँ धन्य ठीक अच्छे एटा हला लैट ठीक अच्छे लैटिट्यूड so the latitude of a place express its angular position relative to the plane of equator ना एटी latitude टा एमती ए लाइन टा ना इक्वेटर लाइन टा तो एक्सिस ऑफ द अर्थ केमिति हबो latitude measures the angle north or south from the equatorial line ठीक अछि which of the following is the farthest from the center of the earth south pole equator Antarctica circle tropic of Capricorn which of the following is the farthest from the center of the earth center of earth equator equal ना कौन एटा सेंटर कोटा एबे को मत 30 रे मार्च एट जो जिते मु तुम कही एमती जो गोटे अच्छी जो बॉल जो अच्छी जो लंबा जो थाए ठीक अच्छे आमर जो ग्लोब रे जो ये जगह रे टिके लंबा थाए बॉल टिके थाए पृथ्वीर एटा कौन कहती इक्वेटर देख which of the following is the farthest from the center सेंटर अधिक फार्थ एटा ही था ठीक अच्छे एटा को सेंटर धरने आज एक्सेप्ट कर दियो एटा सेंटर एक्सेप्ट जोटा भी ठीक अच्छे एटा को सेंटर एक्सेप्ट कले एटी टिके लंबा था एटा टिके लंबा था सेति में एटा ही था due to the equatorial bulge the earth's radius is greatest at the equator if the difference in time between two places were 2 hours and 20 minutes then the difference in their longitude would be how much देखो 15 डिग्री is 4 मिनिट सेमती से कहला 2 hours माने 15 4 60 15 into 4 माने केते is equal to 60 मिनिट माने केते 1 hour ठीक अच्छे माने 15 डिग्री है सॉरी 1 डिग्री एटी 4 मिनिट ठीक अच्छे 1 डिग्री 4 मिनिट मुझे तुम भूल कहीदेली 1 डिग्री 4 मिनिट 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनिट बा घंटे ठीक अच्छे तो ये केते है 15 15 दीटा है 30 नहीं आस देने बाकी रहा केते 5 डिग्री 4 5 20 माने 20 मिनिट आसीगला तो ये 30 डिग्री है देन जो 20 मिनिट है 4 5 20 आ जो 5 डिग्री बंचिला कौन 35 ओके अर्थ रोटेट्स 1 डिग्री एवरी 4 मिनिट्स 140 total minutes divided by 4 equals 35 degree okay when ship crosses date line ideal international date line from west to east कौन हुए कहला गोटे शिप गोटे समुद्र धन्य शिप जाउछि हैला
एटा हला आइडियल इंटरनेशनल डेडलाइन ठीक अछि जेतोले ए माने कोन फॉरवर्ड जीवो फॉरवर्ड गले कोन हबो गोटे दिन माइनस हुए ठीक अछि माइनस हबो माइनस ठीक अछि माने जेतोले ईस्ट आड़ को जीवो वेस्ट रु ईस्ट आड़ को आसिले माइनस ठीक अछि जदि बैकवर्ड आसीबो जदि बैकवर्ड आसीबो तारे कोन प्लस हबो प्लस ठीक अछि सेठी कहछि व्हेन शिप क्रॉसेस डेडलाइन ए डेडलाइन देखि शिप गोटे धन्य गोटे शिप गोटे क्रॉस कला ठीक अछि गोटे शिप क्रॉस कला कोन माइनस हबो इट लूजेस वन डे ना कोन 32 ओके कहीं की हैला ना फॉरवर्ड हेले माइनस हबो बैकवर्ड हेले वेस्ट रु ईस्ट को फॉरवर्ड हेले कोन हबो माइनस हबो एमती फॉरवर्ड हेले माइनस बैकवर्ड हेले कोन हबो प्लस हबो एपर साइड ईस्ट रु वेस्ट को आसिले प्लस हबो क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेडलाइन ईस्टवर्ड requires subtracting a day losing a day on the calendar okay the international deadline passes through the Bering Strait Florida Strait Gibraltar Strait Malacca Strait देखो एटी टिके कंफ्यूज रहे जियोग्राफिकली जदि तमे देखिबो आज जियोग्राफिकली तमर कोटा बेरिंग स्ट्रेट किंतु आज गोटे वर्ष क्वेश्चन आसीतला जे कोन आंसर आस्तला ओडिशा गवर्नमेंट हिसाब रे फ्लोरिडा स्टेट ठीक अछि मन रखि देबो एटारे टिके कंफ्यूजन रुए काहे कि ना लाइंस follows the 180 degree meridian through the Pacific Ocean 180 degree meridian जो Pacific Ocean रुए एटा गोने टिके कंफ्यूजन छै ठीक अछि बुझी पाइलो किंतु आंसर आसिले जदि नॉर्मली तुमको आसो फ्लोरिडा स्टेट मार दबो बेरिंग स्टेट जियोग्राफिकली हो ठीक अछि आज जियोग्राफिकली बेरिंग स्टेट हो फ्लोरिडा स्टेट हो तमर ओरिजिनल आंसर ठीक अछि डेट भी देछि ठीक अछि सेंस ऑफ टाइम इज ड्यू टू व्हाट रोटेशन ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ रोटेशन ऑफ मून बोथ ए एंड बी कोडा 34 प्रश्न सिंपल अधिक किछि कष्ट नै सेंस ऑफ टाइम इज रोटेशन ऑफ अर्थ ना कोन कोन समस्त अच्छा ना कि कोड पळे पळे गलो समस्त आउ डेली सेंस ऑफ टाइम इज डिक्टेटेड बाय द अर्थ रोटी पर आवर रोटेशन जोटा कि 360 रोटेशन ना कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेट सर्कल अब तो कोटा हला ग्रेट सर्कल कोटा भीतर इक्वेटर ये जो इक्वेटर टाको ग्रेट सर्कल कहा जाए ना कौन एते कंफ्यूजिंग जियोग्राफी ना कौन ए ग्रेट सर्कल्स प्लेन passes through the earth's center the equator is the only such latitude ठीक अछि the greenwich mean time but at time time हे जेटा मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक टाइम एटा time GMT ठीक अछि is the standard time of which of the following countries को कंट्री स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच लाइन बा कहितली अरे यूके रे कहितली यूके रे ग्रीनविच लाइन अछि 0 डिग्री जोटा कहंती हमरो कोन मेरिडियन प्राइम मेरिडियन बा जोटा हम कहू ग्रीनविच लाइन सेटा को जगह रे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी BRO से प्लेस ना जोटी ग्रीनविच लाइन जाइछि से प्लेस यूके बा लंडन से जगहटा BRO ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ए जो मेरिडियन जाइछि प्राइम मेरिडियन ठीक अछि
Greenwich line जोटा को GMT is centered on the prime meridian which passes through the United Kingdom. At which particular place on earth are days and nights are equal length always? Prime meridian, equator, poles and tropic of Capricorn. Question of 37 am अच्छे again आसिल टिके स्पीड बुले देले माउस पॉइंटर तो टिके अभ्यास नहीं जेहेतु ठीक अछि से कहला which particular place on earth are days and nights are equal length always एटा कोन तमन डिसाइड करो जेतोले सूर्य किरण एमती पड़े एट सीधा ठीक अछि कोडी इक्वेटर किछि अदर कष्ट नहीं किछि भी कष्ट नहीं भाबिबार किछि असुविधा भी नहीं ठीक अछि अरे देखो जो पटरे पड़िला से पटा दिन रहिला एपट पटा जो अंधार पट रहिला दिन एंड राति सेम टाइम रे इक्वेटर जगह रहिला नहीं हना नहीं अरे भाबियार कोन इक्वेटर कॉन्स्टेंटली रिसीव नियरली इक्वल अमाउंट ऑफ द डे एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर The international dateline makes slight deviation from 180. Deviation माने भाग करे. Ideal slight deviation makes slight deviation from 180. Divides the land masses under the same administration. Does not divide the Bering Strait. Does not divide a group of islands under the same administration. Divide the Pacific Ocean into two equals. मानो कि तो ideal international dateline ideal Pacific Ocean मझिरे माने ओशन देखी जाई छेटा पैसिफिक ओशन आइडियल इंटरनेशनल डेटलाइन ठीक अछि कोन divides the Pacific Ocean into two equal halves. गोटे जगह रे does not divide a group of islands under the same administration भी कहा जाए किंतु करेक्ट आंसर Pacific Ocean को two equal halves डिवाइड करे ठीक अछि ओके 1 degree of longitude on the equator is equal to a distance of how much 1 degree equator 1 degree just टिके 1 डिग्री माने एति की जस्ट टिके धन्य केते केते माइल 69 ने केते जोटा को इक्वल 111 किलोमीटर कहते ना कोन ठीक अछि बुझिबा टॉपिक उडाटे बुझिबा एट द इक्वेटर 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज रफली 69 miles or 111 kilometer. Which of the following statements is correct? All longitudes and latitudes are great circle. All latitudes and equators are great circle. All longitude and Greenwich Meridian are great circle. None of these are. Question of 40. तो किसी difficult किसी नहीं. Just टिक्के brain लगे जानते. ठीक है इक्वेटर एटा रहला लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोडा जानि छ ऊपर लाइन टा जेटा हम कहू ऊपर लाइन एमती टा कोन से कहला ऑल लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड longitude and latitude are great circles no हबा कि सब longitude और latitude सेम की सब longitude latitude longitude की latitude को खाली गोटे एमती केते केते गार गुडा को पड़ी छी उसपे अर्थ ठीक अछि ऑल longitudes and equator are the great circle ठीक अछि longitude कहले एटा छोटो कोनते longitude नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जोटा को कह जाए longitude जोटा कहंती आ इक्वेटर आर द
ग्रेट सर्कल सब लैटिट्यूड किंतु सेम नुहे ठीक अच्छे every longitude line by meridians form half a great circle and the equator is full great circle ठीक अच्छे every longitude जत सब longitude बाला जत सब longitude line अच्छी ये सब कौन half great circle करे and equator हला full great circle ठीक अच्छे the international date line is located in the where इंटरनेशनल आइडियल जस्ट टिके पूर्व कही साउंड तो आसुथबो साउंड आसुनी ना आसुनी प्ले टिके कंफर्म कराओ साउंड आसुनी ना आसुनी आसुची तो ऑडियो आसुथबो ऑडियो तो क्लियर आसुथबो ऑडियो ऑडियो आसुना नहीं टिके कहि दबो आसुची तो पिला ही कहउछन आसुची बोली कहू ठीक द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन ना कोन कोडी देखा जाए पैसिफिक ओशन भीतर इंटरनेशनल डेट लाइन बाय आइडियल देखा जाए पोजीशन इन द मिडिल ऑफ द पैसिफिक ओशन जोटा डिवाइड भी करे पैसिफिक ओशन को यूएसए इज डिवाइडेड इनटू हाउ मच टाइम जोन्स यूएसए केते टाइम जोन भी डिवाइड कराइ कि कहि परिबो यूएसए केतेटा कि कहि परिबो आंसर समझ दे दियो वेरी गुड 5टा वेरी गुड एक्सीलेंट अच्छा रशिया रशिया कितना टाइम जोन रशिया रशिया बहुत बड़ एरिया ना रशिया केते रशिया कितना टाइम जोन वेरी गुड वेरी गुड ओके 11टा वेरी गुड ओके the continental US plus Alaska and Hawaii are divided into several standard time zones okay latitude and longitudes se koila latitude and longitudes both what pass through poles run parallel to equator run perpendicular to each other none of this लैटिट्यूड सब लॉन्गिट्यूड सब एमती कौन परपेंडिकुलर टू ईच अदर ठीक अच्छे ठीक अच्छे लाइन्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स टू फॉर्म ए रिजिड ग्रिड 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 व्यू कहले ये जो एम सब जाइतबो ग्रिड व्यू जोटा कहते एम सब एगुड़ा सब ग्रिड व्यू कहते ठीक अच्छे latitude of a point on the earth is measured by the distance in कोथरे measure करा जाए kilometers from the poles angles from the equator kilometers from the equator none of this simple question kilometers from the poles no सेठी किलोमीटर नो सेठी एंगल ले देखा जाए kilometers from the equator no b एंगल ना कोन okay very good latitude is defined as the angular distance north or south of the equator okay the international date line is an imaginary line extending from pole to pole along the place on the earth's surface and lies along the kete degree international date line is an imaginary line ideal चित्र किए जानथिबो ideal गोटे अनुमान बने दूची जदि भूल है कि कह ठीक अच्छे एमती गोटे थी एमती आसिकी
सॉरी सॉरी टिके एटू कौन कौन हम ना एमती एटू आसिकी एमती गोटे आसी एमती तो ना कौन एटा जोटा आसी एमती लगी ठीक अच्छे जिग जैक लाइन वेरी गुड very good 180 the red line follows the 180 degree meridian okay the equator is what 90 degree 0 degree 00 रह जाइछि जोड़ गोटे 0 degree ना कौन very good the equator is defined as the 0 degree parallel of latitude okay what is the longitude of a town if its local time is 6 p.m. then greenwich time is 4 p.m. okay then a greenwich line eta eti 4 p.m. ठीक अछि accept town 6 p.m. 6 p.m. कहि माने से आगे रे अछि फॉरवर्ड रे अछि ता माने ईस्टर्न एरिया एटा ईस्टर्न एरिया ना कोन एटा ईस्ट रे लोकेटेड अछि काहे कि ना फॉरवर्ड रे अछि 6 p.m. 2 घंटा आगे अच्छे 4 रु 2 है 2 घंटा 2 हावर माने 60 माने 30 डिग्री सॉरी 30 डिग्री ओके 2 हावर माने 30 डिग्री GMT ग्रीनविच मीन टाइम ना को टाउन इज 30 डिग्री ईस्ट 15 डिग्री पर हावर ओके maximum difference in the spacing of longitude is what at poles at equator at tropic at arctic circle maximum spacing of longitude कहले कोटा lat long at poles ना at equator ना कोटी देखो गोटे एग्जांपल दउची एमती केते थर बुझेलिनी तुम मानु तुम बुझिबो ना ठीक अछि एटा लॉन्ग एल ओ एटा लेट एल ए ठीक अछि छिला मैक्सिमम डिफरेंस इन द स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ठीक अछि लॉन्गिट्यूड कोटी डिफरेंस अधिक देखा जो at equator very बहुत बढ़िया longitude lines are furthest apart at the equator and converge at the poles okay the local time of a place is known with reference to its what distance from the capital city longitudinal position latitude position none of these above कोटा क्वेश्चन नंबर 49 रे हम पहुंच गले से कौन से कहला तो लोकल टाइम ऑफ ए प्लेस इज नोन विथ रेफरेंस टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन ना कौन लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन नु लोकल टाइम जना जे एटा काई ना ग्रीनविच लाइन ए सारो जो पोजीशन को कौन लोकल टाइम को धरा जाए आज सब कौन ठीक अच्छे लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन नु जना जाए देखो मेरिडियन लाइन सब ए टाइप रो ना जो ये जो डिस्टेंस ये सब कौन जीएमटी हिसाब रे निया जाए लोकल टाइम जेमती हमर 5:30 कोलकाता ओडिसा रो जेमती कोडांटा जाउची कोलकाता 5:30 हमर लोकल टाइम सब को से लॉन्गिट्यूडनल काहे की होबा देखो धरिन्यो ओटे इंडियन मैप हला इंडिया तीनटा मेरिडियन सेंटर रे जाउची ठीक अछि तीनटा सेंटर जाउची एटा आसाम
आसाम रो एटा एक्सेप्ट करो एटा गुजरात रो एक्सेप्ट करो ठीक अछि आसाम टिके गोटे ग्रीनविच लाइन नो टिके याडो को थाए जोटा को 1 आवर 45 मिनिट ठीक अछि एटा धन्य एटा को छाड़ा ए जो डिस्टेंस टा को सूर्य किरण एठू ए जगह रो सूर्य किरण ए जाके पहुंचबा को हेले 1 आवर 45 मिनिट रो डिस्टेंस लगे तो सेति पई कोन लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन पई लोकल टाइम गुडा को टिके डिफरेंस थाए से कहला लोकल टाइम इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ द सन रिलेटिव टू स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड ओके सूर्य किरण टिके पहुंचबा को टाइम लगे पड़ीतिबो जो माने पड़ीतिबो आसाम रो कोटी द्वारका गुजरात रो द्वारका हाउ मेनी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर देयर ऑन द ग्लोब ग्लोब रे कितरा लाइंस अछि के कहि परिबो 50 नंबर एम अछि देखो लैटिट्यूड कहले आम कोटा आम से कही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहनी एटा हला लॉन्ग एल ओ ठीक अछि एटा एल ओ एटा लॉन्ग लैटिट्यूड एल ए ठीक अछि एटा एल ए आर देयर ऑन द ग्लोब हाउ मेनी लाइंस ऑफ द लैटिट्यूड आर देयर ऑन द ग्लोब से कही केतरा लाइन अछि से कही 90 degrees north and 90 degrees south 99 north 90 south ठीक अछि there are 90 degrees north and the 90 degrees south of the equator ठीक अछि which is a chronometer what is the chronometer chronometer kon an instrument used to measure the degree of a latitude at ai highly accurate timepiece which is used to keep greenwich mean time a scale which tells the distance between any town places but low places none of this what is a chronometer chronometer कोटा अरे समुद्र रे जते बळे नाविक माने बा नावी पर्सन्स माने जते यात्रा करंती ठीक अछि क्रोमोमीटर ओटे लागि न थाए तांको जहाज रो ये रे जेमति फ्यूल मीटर उडा भलिया क्रोमोमीटर ओटे लागि थाए ठीक अछि जोटा कोन ए हाईली एक्यूरेट टाइम पीस व्हिच इज यूज्ड टू कीप ग्रीनविच मीन टाइम डायरेक्शन जानिबा पई ठीक अछि सेलर्स यूज्ड टू chronometers to maintain gmt and determines longitude at sea ठीक अछि ओके so 19 north 90 south degree total 180 हेबो नहीं से नॉर्थ साउथ बुझी पारुछि गोटे सेकंड how many lines of latitude are there on the globe गोटे सेकंड ओके नॉर्थ 90 साउथ 90 किंतु गोटे थर क्वेश्चन टा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गोटे तो स्तर 90 को ही एज ए गवर्नमेंट एक्सेप्ट करतला किंतु आज पर जदी देखिबा ग्लोब रे इक्वेटर को मिसेइल ही 181 हबो हां
ओडिशा गवर्नमेंट रो किछि भी नहीं बुझि परछ तो केते बळे कोटा को उठे की पके दबो माने मन इच्छा कना गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटा से जो थरे की एक्सेप्ट कराइतला आज 90 को सिति पई बाध्य होई कि हमन कोन जो क्वेश्चन प्रिपेयर करिया पड़छि ए सब जिंस देखि कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उडा को देखि कि से हिसाब रे आंसर उडा को प्रिपेयर करिया पड़छि हां 181 अछि हां एनसीईआरटी रे आज 181 अछि कने इक्वेटर को ऐड करले 181 हो जदि इक्वेटर को हम ऐड करिबा 1 डिग्री जो रहउछि सेटा 181 हो ठीक अछि हाँ 90 प्लस 1 रहे किंतु जदि लैटिट्यूड सर्कल्स रे जदि हमें सिंस द नॉर्थ पोल हमें जानी 90 डिग्री साउथ पोल आज 90 डिग्री सेटा 180 रहिला प्लस मझी जोटा लाइन टाको आज 1 डिग्री 181 ठीक अछि अच्छा हमें एक्सेप्ट एटा करबा आंसर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेहेतु गोटे वर्ष सेटा को एक्सेप्ट कराइतला सेति पई What is graticule? So, what is graticule? Graticule कौन? The complete network of parallels and meridian on the earth. The latitudinal extent of the country. The difference between standard time. None of this. Graticule कौन? None of this. No, I don't know. Complete network of parallels and meridian on the earth graticule कहै ना कोन कहै पले the complete network of parallels and meridian on the earth ठीक अच्छा बैटरी सब रन होगा से ठीक ब्लैंक हेरा नहीं अच्छा ठीक है हाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल सर्कल इक्वेटर 23.5 20.5 25 सब स्मॉलेस्ट सर्कल कोटा भीतर कोइ ना सब स्मॉलेस्ट कोइ जीव स्मॉलेस्ट सब छोट कोटा देखो सीटी पचार आ भीतर सबुठू स्मॉलेस्ट कोटा सर्कल सर्कल भीतर कोइ हाँ देख हाँ जिते छोट हम देख ये जो आम जिते तल को जिते ऊपर को जीवा सबुठू लास्ट 23.5 आम जानी ना कौन ना कौन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ना कौन किंतु आज देख ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जोटा आम कहे सबुठू
स्मॉल सर्कल बा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जोटा कोचे स्मॉल सर्कल इक्वेटर है ग्रेट सर्कल ताकू एक्सेप्ट करेंगे आगे स्मॉलेस्ट आज एक्सेप्ट करेंगे आपको एक्सक्लूड कराव मैंने न्यूमेरिकल ऑप्शन भितर 23.5 इज ए की जियोग्राफिकल कांस्टेंट यूज हुए जोटा आज ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ठीक है प्राइम मेरिडियन इज आल्सो कॉल्ड आर्कटिक सर्कल इक्वेटर ग्रीनविच मेरिडियन आर्टिपोल क्वेश्चन 54 आज प्राइम मेरिडियन कहले ग्रीनविच मेरिडियन है कौन ना कौन ग्रीनविच मेरिडियन very good next the prime meridian is specifically the 0 degree longitude passing through the greenwich okay how many time zones has the world been divided world ketara time zone divide is आज शेष प्रश्न लास्ट क्वेश्चन आज 24 नहीं अच्छा ठीक है the world is divided into 24 standard time zones each representing roughly 1 hour of rotation 1 hour कहले 15 डिग्री बुझी पाला एबे एटा पूरा क्लियरली बुझी पातबो से अनुसार 15टा डिग्री जो गोटिए लाइन सेमती 24टा 15 डिग्री हेले केते टोटल 24 आवर ठीक अछि धन्यवाद समस्त को आशा करुच्ची समस्ते आज टॉपिक बुझी पारिथिबे पाखापाखि 3टा क्वेश्चन बोधे टिके डाउट रे रही गला समस्तंकर जोटा कि हमें क्लारिफाई भी कले पछरे जाओ धन्यवाद सत्य जो क्वेश्चन कल सेटा कहीं ना प्रीवियस गोटे ईयर क्वेश्चन सेटा मार्क करी रखी थी प्रीवियस क्वेश्चन गुडा करे गोटे ईयर एक्सेप्ट होता जे कि कैलकुलेशन गोटे एक्सेप्ट होता मुझे देखी भलसे मिले भी काली ठीक अच्छे धन्यवाद समस्त को आशा कर समस्ते टॉपिक आज टॉपिक बुझी पारि जदि कहार किसी डाउट्स अच्छी कालीर क्लासेस रे आम डिस्कस करवा ठीक अच्छे कालीर टॉपिक आम डिस्कस करवा लास्ट आज ए मेजर कमिशन एंड कमिटीज ठीक अच्छे कमिशन एंड कमिटीज उपर डिस्कस करवा जोटा आमर लास्ट टॉपिक आज बीएड एंट्रेंस सिलेबस रो जनरल अवेयरनेस रे जनरल इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल कमिटीज एंड कमिशन टॉपिक एंड एजुकेशनल पॉलिसी एंड इनिशिएटिव एजेंसीज वर्किंग फॉर एजुकेशन ये टॉपिकटा काली डिस्कशन करवा 11टा बेले दिन 11टा बेले समस्त प्रस्तुत थिबो ठीक अच्छे आशा कर आज टॉपिक भल लगी खास करी जियोग्राफी रे गोटे थ्योरी क्लासेस आनबे जोथरे विथ थ्योरी हाथ रे गोटे गोटे ड्राइंग करी ग्लोब रो पूरा ए टू जेड डिटेल्स डिस्कस करवा जदि टॉपिक टी भल लगी निश्चित भाव चैनल को तथा वीडियो को निज सांग मान सहित जो मैंने बीएड प्रिपेयर होती निज ग्रेजुएशन ग्रुप हो अन्य ग्रुप गुड़ाक जो अन्य मैंने भी प्रैक्टिस करेंगे आम सहित लाइव रे जोग दे क्लासेस प्रैक्टिस करेंगे टीजीटी आर्ट्स हो टीजीटी ओडिया रिलेटेड क्लासेस भी आम चैनल रे हुए ता सहित नेक्स्ट टीएट हो सीटेट हो ओएसएससी हो किंबा ओटेट हो ये सब क्लासेस हुए ऑफलाइन हुए ओएमआर भी हुए थ्योरी क्लासेस हुए जदि कहीं भी चाहूँगी आगामी दिन में बीएड एंट्रांस पाई हो किंबा टीएट पाई ओएसएससी ओटेट आम सहित जोड़ी ही रही पारे धन्यवाद समस्त को जय जगन्नाथ शुभरात्रि वंदे उत्कल जननी सारिबा थैंक यू समस्त को धन्यवाद।